in fact elaborating, explaining, defining the word secured. It is saying secured will include those who join that party. Own and secure are the equal. Yes, so that is the entire purpose. So secure ka lafz sirf isliye maine arz kiya tha yahan istemal hua hai as opposed to clause E, because there's a provincial linkage being drawn here. In the non-Muslim seats there is no provincial linkage. The entire country is a constituency. तुम्हारी इंटरप्रिटेशन सिक्योर्ड का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि दोनों को मिला के, एक तो जो उन्होंने जीती सीटें अपनी और जो इंडिपेंडेंट उनके पास आए, उन दोनों का जो टोटल होगा वो सिक्योर्ड है। और आगे जाके एम्पलीफाई किया उसको। जी मेरी गुजारिश ये है के तहत वो पढ़ लीजिए कि मजीद उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो सीटें आपने जीती हैं उनमें वो शामिल हो के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनेगा। मेरी गुजारिश I think I think Mr. Madar has hit the nail on the head, and it makes good sense. There are 3 days, right? Now a political party has one certain seat, and in the first day 3 members join it. Those will not be categorized as a political party winning the seats, but they will be categorized as seats secured by the political party. Zara, don't interrupt. The second day 2 more join. We still haven't run out of the 3 days, so same principle will apply. Difference between one and secured. Now you are faced with a thing. If they said only one, then wo secured wali seats kaise hoti? So secured can be reconciled. You see, there is wisdom in every word of the Constitution. We should just not throw it aside and start quoting Justice Learned Hand and this, that, the other. So ये आपने वो इन्होंने 2 दिन में जो secure कर लिए, अब तीसरे दिन उन्होंने कहा जी 4 लोग join कर लिए, आप भी हमारे साथ आ जाइए. उन्होंने कहा चलो हम भी आ जाते हैं. In fact, if I've understood correctly, the argument was the other way around. Yeah, argument की बात नहीं है. The reading was the other way around. Secured से ये मतलब लिया जा रहा था कि ये वो हैं जो directly elect हो गए. आप बता दें क्या है. कि मेरी गुजारिश ये है कि the word secured, in fact, if we read the proviso, kindly read the proviso. नहीं, आप बताएं कैसा है. कि वो तो ये कह रहा है कि जो join करेंगे, they will be treated as seats won by that party. Kindly see. वो include होंगी उनमें जो कि वो जीती नहीं. ये से पढ़ लेते हैं ना सर. Provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party will include the independent candidates. जी बिल्कुल. तो उसका स्कोर बढ़ जाएगा. So ये कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि एक पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं. जीती हुई सीट्स में इस सिक्योर्ड में 2 कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स हैं. एक तो जो आपने जीत ली सीटें वो, प्लस आपके पास जो इंडिपेंडेंट आए वो. जब आपने मर्ज किया तो टोटल नंबर ऑफ सीट बनी, उसको एम्पलीफाई किया है प्रोवाइजो में आगे जाके कि वो जो आपने जीती. आप फैसला करेंगे. फैसला नहीं, ये तो आप मेरी गुजारिश ये है राजा, अगर हम थोड़ी सी देर 1 सेकंड जरा टेक्सचुअल अप्रोच से बाहर निकले, मुझे करने दे. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा आईनी प्रिंसिपल डिफीट हो जाएगा अगर हम पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए एसआईसी को. कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी थीम या कौन सी वैल्यू या कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है, कोई वायलेट नहीं होता, उल्टा सपोर्ट करता है. सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ऑन अ कंसेप्चुअल लेवल द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी इनकरेज्ड टू कम इनटू. मैंने जो आपको नोट दिया है उसी पे है. बस सिर्फ टेक्सचुअल हाँ कह दिया. नहीं सर, मैं बताइए ना कैसे. अगर आप अच्छा चले, माय लॉर्ड ने सवाल पूछा है, मुझे तो जवाब नहीं देना चाहिए, मगर बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई. अवाम को पता होना चाहिए आप कौन खड़े हो रहे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं. तो ये बात तो नहीं कि जी इंडिपेंडेंट को उन्होंने उनका एक आ गए, अब वो किस जगह जाना चाहते हैं. तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट्स नेवर बीन इन गवर्नमेंट, इट्स नेवर कंटेस्टेड. व्हाट हैज हैपेंड? सो दीज ऑल दीज थिंग्स, if you keep interrupting. I find it very difficult to articulate anything. चलिए आप ही अर्ज कर लें. सर मैं अर्ज करूं. एक सेकंड, ये माय लॉर्ड का जस्टिस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिल्कुल. कि सपोज अब 4A में वी हैव 25 पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं. अब वोटर्स को पता है कि 25 पार्टियां. मेरा नहीं ख्याल कि वोटर ने सारों के मैनिफेस्टो पढ़े हुए हैं कि 25 पार्टियां हैं, और एक पार्टी और है जो उसने इलेक्शन खाली नहीं लड़ा, वो उसको ज्वाइन कर गए. तो क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें नुकसान क्या है. व्हाट्स द गड़बड़? कोई नुकसान नहीं है सिवाय इसके कि वोटर को पता नहीं था कि ये पार्टी भी इलेक्शन में थी. अब इलेक्शन में एक छोटी सी पार्टी भी हो सकती है जो वोटर ने कभी देखी भी नहीं, अगर उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर जाए तो वो भी वही चीज है जैसे कि एक अनहर्ड शेल्फ पे पड़ी हुई. अच्छा चलिए एक मफरूजा ले लेते हैं. एक बिलियनर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी खरीद ली. ठीक है, होता है ना पाकिस्तान में, खरीद ली, सबने ज्वाइन कर ली.
تو اب نہیں ہے، اب بہت وزڈم ہے اس میں. اب یہ کہنا کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، تو وہ ایک آن دا شیلف پولیٹیکل پارٹی جیسے کمپنیاں خرید لیتے ہیں نا لوگ آن دی شیلف، جیسے آپ کو تو پتا ہوگا نا یہ باہر کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ وغیرہ، وہ گھر وغیرہ باہر خریدنا ہوتے ہیں، وہ کوئی شیلف کمپنی خرید لیتے ہیں. تو پھر آپ بات کر رہے ہیں جی میں نے سنا آپ کو تعبل نہیں رکھا کوئی رکھتا ہے سوال ختم نہ ہو ابھی تو تھوڑا سا سن لیں. کیا ہم آپ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا آپ نے ٹائم لگا لیا تو ہم آپ کو سنے رہے ہیں. تو آپ ہماری بھی تھوڑی سی ہماری جو ذہن میں جو باتیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں تو پھر آپ ان کو دور کیسے کریں گے. تو اس میں پھر ایسے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بزنس مین آگے پولیٹیکل پارٹی کیا کہ مجھے کیا الیکشن کرنا ہے، مجھے کیا لڑنے کی ضرورت ہے، میں ایک پولیٹیکل پارٹی خرید لوں گا، سارے انڈیپینڈنس کو جمع کر لوں گا بس. تھینک یو ویری مچ. از دیٹ واٹ وی وانٹ فار پاکستان؟ نہیں سر، میں عرض کروں دس از ناٹ the situation we are faced with. But I'm just saying we have to as a matter of hypothetical if we are going to the wisdom of the thing, the wisdom and the I go by the letter. So may I just park this question and come back after we've looked at some judgments which have actually answered this? Allow me to do that, and my lord has been alluding to that. I've absolutely parked this question and I will come back to it. What Justice Shah has asked me is that if the independents are allowed to join a party that is not already in the National Assembly, what constitutional principle is thereby violated, or what I would say constitutional purpose is thereby violated? And my short response was that none. In fact, if they're not allowed to join such a party, maybe this is a party that they feel closer to. All other parties were already there. They didn't join those parties. There was a reason they did not join those parties, and they chose to remain independent. Now they don't want to join a party that they earlier had not joined. They in fact look for a new party which is closer to their thinking. They come together and they join that party. This is in every sense of the word coherent and consistent with the constitutional principles that your lordships have upheld. Now can راجہ صاحب there's a difficulty in this. جی یہ 86 جو elected آئے ہیں جی they were not elected as independents. The voter had voted for them as a political party, PTI. Now the most fundamental right and a political right جس کے اوپر یہ پورا constitution کھڑا ہے, that is the right to vote. And now the party cannot violate that right to vote by getting the votes from the people in the name of a political party and then going and joining a political party which has not secured any seat. Let me explain. It will be an interpretation. Okay, what if it joins a party with one seat, or a party which is contested but not won any seat? Dekhana, you are not answering the question. Sir, मैं अर्ज करूं. Why was there a need for 86 members who were elected as members of a political party to go and join one person? Sir, I know where my lord is taking me, and I'm a little hesitant to go there, because my feeling is that if we are treated as independents, and if the choice that we have made as independents, and I can assure my lord that when we were campaigning, we had different symbols, so the electorate had no confusion that we are contesting as independents, even though we may have the backing of the PTI. So in law, when we got elected, we were elected in law as independents. I'm not talking of the reality or the morality of the situation. In law, we were independents, and therefore we had the choice within 3 days to join a party. And we've joined a party, and that party now is the such party for the purposes of the proportional representation. I completely understand what my lord is saying. That is not such party. That is not such party. جی دیکھ لیتے ہیں, پھر دیکھ لینا. دیکھیں سچ کا جو لفظ ہے, it alludes to... آپ مین آرٹیکل کو تو اپنی پڑھ رہے ہیں, پرووائزو پہ. میں مین کو بھی پڑھ رہا ہوں. لیکن مین میں کہا ہے جنرل سیٹس. ایک منٹ کے لیے آپ ایک منٹ کے لیے پرووائزو کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ سمپل مین میں پڑھ لیں, وہ کیا کہتا ہے؟ مین یہ کہتا ہے کہ representation of political parties lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly. Now let's pause here. ایک منٹ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے مختلف مثالیں ہم دے رہے ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ اسمبلی میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ جو اوپر کا پورشن ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ رک جائیں کہ وہ پارٹی جنہوں نے سیٹ سیکیور, جی میں عرض کر لیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں. So the word secured is not defined.